that creativity without strategy is an art, and creativity with a strategy is advertising. And as very rightly said by David Ogilvy, in the modern world of business, it is useless to be a creative, original thinker unless you can also sell what you create. It's fantastically told by or spoken by David Ogilvy many years back. And today we have Manish Bhai with us, who will be dwelling around on the creativity in advertising, and with his experience, he will be sharing a lot of experience which he has. And I'm very sure and I'm very confident that it will benefit all of us who are from Gujarat, who have been participating in this session, and will take it. The format which we have decided is that he will take you through the session, and at the end he will take few questions. And he has also tried to incorporate all the questions which you have shared with us when we were registered. Manish Bhai, now it's all yours. You can please go ahead with your interesting presentation, please. Thank you. Thank you, Sanjay Bhai, for the kind words, and really, thank you, Brand Club and Sanjay Bhai, to having me here. Thanks to, I would not say COVID, but due to the pandemic, we meet more people virtually than normally we probably meet, physically. So I think. In a positive side of COVID, I would say that, okay, we are meeting all of you. Thank you, everyone, to be part of this small little, opportunity for me to express my experience to you all. So directly, a couple of requests. See, I've started my career in analog world, been physically interacting with people for many years. It is just 8 months where we have this situation. So, and we are using video calls. Used to avoid Skype calls and all, even my meetings. I used to go and meet clients wherever they are. So request you to be more face-to-face. That will be more comforting to me. Because I'll at least virtually feel that, okay, I'm talking to people rather than talking to boxes. So that is one small request. Also, the session is intended to be a little interactive. So I will get to know if someone wants to say something, probably I will be able to interact with that person. Yeah, I think these are the two requests. Apart from that, I think any new thing or beginning hone se pehle, in India, there is a tradition in a Hindu mythology and Hindu whatever customs and traditions that a Ganesh Aarti या Ganesh की पूजा वूजा होती है. So, but after movie Padmavat, everything changed. That there has to be a disclaimer before anything which you want to interact with larger masses. So I have got inspired from Sanjay Leela Bhansali, and I put a loaded disclaimer because I know people speak freely, be it Arnab, be it Kunal Kamra, or be it Kangana Ranawat or Sanjay Raut. If they speak their heart, probably you may get arrested and put into jail also. And there will be people doing dharna, throw ink or whatever. So I'll disclaim first. That is my start of the presentation. So first, let's see our Ganesh Aarti, or a disclaimer, what you call it. And that's where we'll start. Please use headphones so that you will be hear clear, because I'm going to share a lot of audio visual. So here we start with the disclaimer. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आए जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोय पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आए जाने रे पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान
that's a request that थोड़ा pinch of salt लेना, दिल पे मत लेना is what I would request all of you. And whenever you wish to laugh also, please make me hear your laughter, because I would be looking at the slide and not looking at all of you most of the time. So just have that courtesy. I'll try to keep the video panel on so I can see some people at least. Yeah. So going back to so as I think Sanjay bhai promised you all that the session has to be interactive session. So first question to all of you, few of you, whatever, please unmute yourself. What is this painting? How the painting has been created? Which tool has been used? Brush, crayons, knife, any other? Someone can answer quickly. Any other? Knife. Anybody else? Knife, sir. Okay. Hand, And hand. okay. So I'll unveil the answer unless someone still wants to add something. Hand. Shall I? Okay, I'll just try to give you the right answer. Okay. So here is the right answer. So before Sanjay bhai cancel the session, I must change the slide. So the crux of the point is this community called painters are a little bit screw dhila. They are mad, right? Now I don't know whether you know this gentleman. This is Salvador Dali. In the world of great painters like Vincent van Gogh and all, I think Dali is a father of surrealism. He has been known for surreal style of painting. Yeah. So now yeah, Please mute everyone. Dipali, just mute it. Yeah, sorry. So so the next question is that what is Dali's house pet? Dog, parrot, cat, rabbit? Answers. Was it a chameleon? Chameleon. Anybody else? Rabbit. Cat. Rabbit. Cat. 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 Okay, None of them. Okay. Cat. And now ये most of the people think that अरे या तो अपने एक drawing anteater का दिखा दिया है और बोला कि ये anteater. How do basically अगर केजरीवाल सबूत मांगते हैं, राहुल सबूत मांगते हैं मोदी से कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं हुई थी, right? So I'm sure you will also ask me कि okay actually कोई सबूत है क्या आपके पास anteater डाली यूज करता था? कि मेरे पास है सबूत. So मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा. So Dali was coming out of the Paris metro in 1969, and this is the real picture, and Dali and anteater. So the point here is even Dali was mad. Next, anybody knows this answer? What did Vincent van Gogh What did give to his favorite prostitute? Chocolate, teddy bear, diamond ring, snow globe. अभी कोई जवाब नहीं देगा. बोलो. I don't think so. This is in the options available. Okay. No globe. So okay, we None can of go them. out. None of them. Okay, none of them. Okay, I'll hint you. Was it a flower vase? No. Bouquet. No. Okay. So the answer is Bouquet. Once he's chopped his ear and gifted to his favorite. Oh, Yeah, that's if you see in the movie called Loving Vincent, it's a movie on his this thing. It's a paint. It's one of its kind movie made out of paintings. It's a painting is a medium, so they painted all the frames of the movie, and you can see the bandage being put on his ear. This is the famous self-portrait of Van Gogh, and he chopped his ear and gifted to his favorite person. So Van Gogh also was mad. Now थोड़ा हिंदुस्तान में आ जाते हैं. ये सब यूरोप ठीक है.
बॉलीवुड में आते हैं तो एवरीबडी आई एम श्योर थैंक्स टू शिवजी एंड शिवजी का प्रसाद एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग कॉल्ड जय जय शिव शंकर. I think I'm surprised that how many youngsters and millennials know about this song. I'm really, this is one song which every youngster knows, thanks to the Shivji Ka Prasad. So, and thanks to what is going on in Mumbai. Yeah. So, so there is a song, and I'm going to play that song ka one peculiar part, chorus. So I'll not play the whole song. I'll start the song and I'll move to the. थोड़ा बताता हूँ फिर बजा ही रहे हो. हम दोनों घर वाले काटा लगे न कंकर के तो अभी कोरस आएगा, आप ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहे हैं. राम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी तूने मुझे थाम लिया सौरभ दी. अरे बजाओ ईमानदारी से बजाओ. अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए. अरे ईमानदारी से बजा बेटा. ईमानदारी से बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए समथिंग like that. Wow. Because of the Zoom session, people get faster. So yes, he says बजाओ ईमानदारी से बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए. Now I'll talk to you about what happened. क्या उन्होंने भांग पी थी किशोर कुमार ने कि ऐसा बोल रहे थे? No. What happened is that R.D. Burman was a music director, and there was a recording going on of this song. And he basically called a lot of live musicians. And आपको पता होगा कि before this digital era, there used to be rehearsals and the music was rehearsed and sung and recorded. So there was a lot of tamjam happened. The producer came and he noticed that इन्होंने काफी सारा तामझाम किया हुआ है और he was annoyed the kind of way the music director got carried away to produce this song. So he obviously must have, he acted as himself, which is producer. So usko dekh ke R.D. Burman obviously was a maverick and a creative person. He little bit got annoyed कि ये मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, अच्छा बना रहा हूँ और ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो obviously उनका मूड ऑफ था. उसके बाद किशोर कुमार रिकॉर्डिंग के लिए आए. उनको पता चला पंचम दा R.D. Burman was in an off mood, and he got to know from the rest of the people that why his mood is off, and then he got to know कि ये reason है. So जब उनकी गाने की बारी आई और कोरस गाने का हुआ तो उसने बोल दिया कि बजाओ ईमानदारी से बजाओ 50,000 रुपए खर्च कर दिए, and he sung it. And look at the spirit of that era of the music director and the producer and the record label, that they kept it in every version of it. And if you can download anywhere, you will hear these words. So even Kishore Kumar was man. I'll tell you Kishore Kumar का एक और किस्सा. जुहू बॉम्बे पे कुछ शूट हो रहा था और Kishore Kumar was in a car and the shot was going on. Janita, can you just mute yourself? Yeah. So कुछ शॉट चल रहा था और शॉट चलते चलते बेसिकली दैट डायरेक्टर कट बोलना भूल गया, तो गाड़ी लेकर के वो लोनावाला खंडाला चले गए, मतलब शूट मतलब चालू शॉट पे, बिकॉज किसी ने कट नहीं बोला तो चले गए. सो दैट इज द पर्सनालिटी, that kind of an eccentric creative guy or a singer Kishore Kumar was. Coming to myself, I was studying in Faculty of Fine Arts, Baroda, MS University in 90 to 94, as Sanjay Bhai quoted there. So approximately 25 years back, there was a footpath bookseller, and I bought this book. This is a real picture of the book. Now I'll just show you certain pages. This is a cartoonist illustrator, and look at, with the pen and a paper, very ancient tools of expression of creativity, what he could, express, what you could draw. No words often, and then
Like, look at this. Or look at this. So 1, 2, 3 के बारे में लोग सोचते हैं, 4, 5 का क्या हुआ? So he thought of that stretch of an imagination. He gave a place to them. Look at this. So power of ideas. Voyeurism in perspective of his man in the picture, yeah, in the drawing. So he has another book called 101 Uses of a Dead Cat. Amazon पे मिलता है ये book, Simon Bond का. So another book. So उसके कुछ pages मैं दिखाता हूँ. 101 Uses of Dead Cat. Yeah. So even cartoonist or illustrator, वो भी वैसे ही था. Now घूमते घूमते पानी का रेला मेरे नीचे आ गया, तो थोड़ा मेरे बारे में बात करता हूँ. तो in 1999 I was working on a calendar. I was a designer, I was a visualizer, art director in Ogilvy, Delhi, as an ad agency. And I was designing a calendar of 99 of Lotus IBM. IBM's another company, subsidiary called Lotus. Lotus, जब ये सब email मतलब internet नहीं था, तब intranet था. तो between offices there used to be an intranet software which is called Lotus Notes. So the company used to make those softwares. So main uska funda tha connectivity, because it was connecting colleagues of a branch from Hyderabad to Mumbai to whatever. So it's a connectivity was the theme. So I was creating a calendar. So I was showing some metaphors of connectivity. So various pictures and put dates. अभी उस टाइम पे जैसे आप आजकल बोलते हैं ना, घड़ी में टाइम कौन देखता है? घड़ी तो एक्सेसरीज है, या मतलब स्टेप्स मेजर करने का औजार है. You don't really think about watch as a time machine now. It's an accessory. Similarly, उस टाइम पे IT client thought little smart client, clever client. So he always, Sanjeet, can you just mute it? Yeah. So उसमें जो पेजेस डिजाइन किए थे उसमें डेट थोड़ी पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए डजंट मैटर. सो पेजेस ऐसे थे जिसमें ब्लर डेट्स है, ऐसे सब पेजेस थे. ये सब तो ठीक है, ये सारे पेजेस में डिजाइन कर रहा था. बट एक पिक्यूलियर पेज था जिसमें उस टाइम पे ना शटर स्टॉक था, ना गूगल था, ना कुछ इंटरनेट नहीं था उस जमाने में. और मैं ये विजुअल डिजाइन कर रहा था. In advertising design houses, what we have to do is we have to create a layout, show it to client approves it in a rough manner, and then we finally shoot and create a final artwork for that. So this was a layout stage where I was creating this layout that, okay, I wanted to show the dates and the zipper like this. Now रात के 12 बजे थे, ना इंटरनेट था, ना ऑफिस की लाइब्रेरी खुली थी, ना शटर स्टॉक था, ना गूगल था. एरा ही वैसा था. तो मैंने क्या किया होगा, जिपर मिडिल ऑफ द नाइट मुझे जिपर का पिक्चर चाहिए. ना लाइब्रेरी खुली, ना बुक है, ना इंटरनेट है, ना कुछ है. तो क्या कर सकता हूं मैं? कैन एनी आंसर्स? Shoot yourself. बराबर. नाइस सजेशन, बट व्हाई शुड आई शूट माई सेल्फ? आई टोल्ड माई जूनियर टू डू द सेम थिंग. बेटा पेन निकालो, स्कैन करो और मुझे जिपर का इमेज दे दो. So he did that. But imagine करो, ये तो मेरे कहने पे he stripped himself. But after 2 months, he himself voluntarily done the same thing again. Like how Goethe, the German poet, actually when he got to read Abhignan Shakuntalam of Kalidas, he put it on his head and danced naked. So same thing my junior did in 1990. उसके बाद 2 महीने बाद. रीजन क्या था कि हमने जो कैलेंडर बनाया था, जो क्लाइंट ने अप्रूव किया था, we entered into a industry's best award. Krishna. So he we won that calendar as a best calendar design in the country,
and we won CAG award. So obviously, out of joy, out of happiness, he expressed his happiness in a most irreverent, most prolific manner, and that's the business I am in. Last time, 25 years probably, I'm in a business of madness, you can call it. So उसमें क्या होता है? Examples बताता हूँ. Lack of protein can make your child really weak. Nutrela soya chunks, 52% protein. So this is the business where we have shown a fly more powerful than a human being. That's the industry I am in. I'll show you a few more examples that what madness we are in. So this is another example. So Nice. business where we have shown a mother and a kid living life with the umbilical cord intact, literally. Another example. कौन सा जुगाड़ है गांव में भाई? अरे ये तो अपनी सीमा है। अरे चिलम के मार गोली देख कौन है? आज मतलब ये पहली हो जाएगी चल। हाय दादी। रहने दे, इतने साल पाछे हमारी याद आई। राखी की लंबी छुट्टी थी, चले आए। आय हाय, एरे नास पिटो। कमल भैया कहाँ है? मैं उनके लिए अमेरिकन डायमंड की राखी लाई हूँ। कमल भाई ना रहे। क्या? कमल भैया तो कमला हो गए हैं। सीमा, कैसी हो बहन? 3 साल हो लिया ऑपरेशन कराए। So a business where we have shown a brother turned into a sister if you don't go home often. Yeah, COVID में हो सकता है सब. So and of course this is the ad which is the second most organically viral ad as per the internal sources of Google and on YouTube video content. तो के हो डॉक्टर साहब? कहना की है? समय भूखो शेर से सबने खा जावे। इबना दवा काम आए न दुआ ताऊ। थारे घर का दीपक कभी भी बुझ सके।
मारी माने ताऊ तब बालक से उसकी लास्ट बिस पुछड़ का वक्त आ गया से भाई गॉड। राम राम। बोल दे बेटा, क्या है थारी अंतिम इच्छा? दीपू ले खा ले रंगूनी पान आखिरी बार। चौटाले की बकरी का दूध पिएगा? जाते जाते पी ले थोड़ा सा। मारे पियर से दहेज में आई रूसी गुड्डी। भाई थारी फेवरेट बिलायती तूतनी ले भर दे इसमें अपनी सासा ने आखिरी सुर। तो फिर क्या चाहिए थारे कुछ हो रहा? लास्ट बिट से बापू। देख मुन्नू, डुबन वाला सूरज और बुझन वाला दीपक, इनके आगे किसी की ना चले हैं। मान जा। ठीक है। चाची है थारी बावड़ा। The song has been produced in Gujarat only. It has been sung by Aditya Gadvi and Vatsala Patil of Baroda, and it's been all musicians from Gujarat. So yeah, so the madness of the business continues. याद है जब पिंकेश छोटा सा था और अपने पहले सिंगिंग कंपटीशन में जब उसने फर्स्ट प्राइज जीता था, आप कितने खुश हुए थे। उसका मेडल सबको दिखा दिखा के बोली जा रहे थे कि आखिर बेटा किसका है, आखिर बेटा किसका है। तब से जब जब फैमिली पार्टी होती थी, गेट टुगेदर होता था, आप उसे तारा रारा गवाकर शुरू हो जाते थे, आखिर बेटा किसका है, आखिर बेटा किसका है। उसे माता के जगरातों में ले जाते थे, भजन गवाते थे और फिर माइक पे खुद ही आके कहते थे आखिर बेटा किसका है, आखिर बेटा किसका है। हैंडी कैम लेके उसके गाने रिकॉर्ड करके फेसबुक पे अपलोड करते थे, कमेंट भी खुद ही पोस्ट कर देते थे, आखिर बेटा किसका है, आखिर बेटा किसका है। और फिर लिटिल स्टार के ऑडिशन में जब चुन्नू मलिक ने उसकी तारीफ की, आपने कैमरे पे आके नेशनल टीवी पे बोल दिया आखिर बेटा किसका है। अब इतनी बार पूछा है आपने तो सोच रही हूँ बोल ही दूँ, पिंकेश ना आपका नहीं पंडित सरजू महाराज का बेटा है। वो दोपहर को मैं टाइम पास के लिए संगीत सीखती थी ना, तो उन्हीं का है।
बहुत गिल्टी गिल्टी हो रहा था ना, इसलिए बता दिया। अब बुरा मत मानना, हाँ प्लीज। कभी कभी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इसीलिए लगवाइए निटको एंटी स्किड टाइल्स। So this was one of the most awarded radio spot of Scarecrow in whatever the it is, the voice was Nidhi Bisht of Viral TVF. So the point is that everyone present in this room is mad, including you, myself, everyone. There is a little bit of a madness in everyone. So how this madness works? There's a little bit of madness in everyone. Some are eccentric, some are crazy. It's like basically, so how it happens? So basically, when we as a human being born and we started and taking a baby step as a race, we have an insecurity कि okay, हम तो मेरे जैसे बहुत सारे human है, so I will get lost. So instinctively, my hypothesis is that we all felt that we need to do something differently. Now, when you, आपने सबने देखा होगा point A to point B जाना होता है, so we all will take a different route to go to point A to point B. We all try to do differently. कोई लड़खड़ाते झूमते जाएगा, कोई हाथों पे मतलब पैर के बदले में हाथ रख के जाएगा, कोई ऐसे राइट से जाएगा, कोई लेफ्ट से जाएगा. We all want to differentiate ourselves with each other in appearance, in behavior, in doing things, in speaking things, in doing hairdos, wearing clothes, everywhere. So we want to create a differentiator because we don't want to get lost in the whole herd of humans. And that's the insecurity which actually created differentiator. And that differentiator, how it functioned, it is that, okay, matlab, you know, it's like a proportion, like a thoda hai, to bola thoda alag hai. Thoda aur badhega, to bola थोड़ा क्रेजी है ना थोड़ा, देन और थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा एक्सेंट्रिक है, फिर थोड़ा और बढ़ेगा दैट मैडनेस, तो बोला थोड़ा यू नो ऐसे ही है, एंड देन उसके बाद और बढ़ेगा तो उसको भेज दो, अभी उसको भेज दो पागल खाने. सो इट इज अ प्रोपोर्शन और एन एक्सटेंट ऑफ मैडनेस. सो थोड़ा है तो पर्सनालिटी और पर्सोना बन जाता है, ज्यादा है तो उसका ना थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब. सो मैडनेस इज ऑल अबाउट सीइंग, ऑब्जर्विंग, absorbing, grasping, understanding, applying, enacting, behaving, doing, making, living things of life with an unusual, abnormal, extraordinary, out of routine, disruptive way. Now ये कोई definition कोई book से नहीं निकाला ना, मैंने thesaurus में जितने dictionary में जितने word थे लिख दिए, but broadly what I want to say is that we would all like to do things differently, everything, and उसका हिसाब किताब है थोड़ा दारू जैसा, अल्कोहल जैसा. सो अगर ज्यादा है, कम है तो उसको बोलेगा कप सिरप है, ज्यादा है तो बोला रम है. गुजरात में नहीं है कुछ भी, बट अब जनरली ऐसा है बेसिकली बाकी स्टेट्स में. सो व्हेन कंज्यूम्ड इन moderation, it's a medicine. When consumed in excess, it's dangerous, right? Another analogy of this madness is this. Sanjit, can you mute it? So another analogy of this madness is somewhat like this. I think I was always misunderstood. People just didn't seem to like me. I think I annoyed them. I got on their nerves. I don't know why. That's just the way it was. Yeah. Maybe I was too intense. Maybe I came on too strong. संजय तो आपको भेजा मैं रिकॉर्ड भेजेंगे. I really can't say. Yeah, it was lonely, really lonely. But
You get used to it after a while. And then one day, everything changed. Somebody finally accepted me for what I am. Since I've got this job, life is completely different. I finally feel useful, good at something. So madness is like also like wind. If you channelize it, it becomes wind energy. If you don't, then it can become tsunami. Yeah. So creativity is actually a channelized madness. Yeah. Putting the madness into constructive and meaningful use. But everyone must be wondering what this method of madness is. मैंने सुना है कि A.R. रहमान जो है वो रात को एक मोमबत्ती जलाते हैं और फिर ट्यून बना देते हैं. सुबह गाई को सीडी दे देते हैं कि भाई ये तेरा ताल का म्यूजिक हो गया. That's the way probably. So A.R. रहमान's music method of madness is a मोमबत्ती में भी. सबका म्यूजिक किसी को एक बार प्रसून जोशी जो जिसके साथ मैंने काम किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि वो हम तुम के गाने को जिसको फिल्म फेयर मिला ना, वो उन्होंने लू पेपर पे लिखा था टॉयलेट में. हर एक का अलग अलग तरीका हो सकता है कि कब आइडिया कैसे आते हैं, अपना मेथड ऑफ मैडनेस हो सकता है. बट एवरीबॉडी इज वंडरिंग कि कैसे, क्या है, कैसे होता है. देयर इज नो एक्चुअली मैंने एशियाटिक लाइब्रेरी, डेविड ससून लाइब्रेरी, whatever you call it, सब जगह देखा, चेक किया. उसका ना कोई बुक है, ना कोई थियोरी है, ना कोई शास्त्र है, ना कोई फॉर्मूला है. there is no way you can get a book where you can understand how do you create or cultivate creativity, how do you develop creativity, or how do you understand creativity. भगवान की देन है. But some people cultivate creativity from madness and pursue a career out of it. And some deal with it. Now you'll wonder कि यार इसमें से हम लोग में से काफी सारे को तो क्रिएटिविटी पे कैरियर नहीं बना रहे. सेशन जरूर सुनने आए हैं, बट आवर गोल इज समथिंग एल्स. इट्स जस्ट ठीक है, एक एंटरटेनमेंट है. बट मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा, अपने मुकेश अंबानी का नाम तो सबने सुना ही होगा. गुजराती, एक उनका एक बंगलो इधर पेडर रोड पे, बहुत महंगा वाला. नाउ ही is a reputed businessman and he takes decisions apparently, and I understand he's sleepless about buying another Urban Clap or Future Group और नई पेट्रोलियम कंपनी खरीदनी है, तो उसमें शायद उनकी रात की नींद चली जाती होगी. बट एक और चीज के लिए उनकी रात की नींद सेम वे में चली जाती है. ईशा की शादी में शेरवानी क्या पहनूंगा, कैसी पहनूंगा, कैसे खरीदूंगा मैं. आपने सोचा उनकी तकलीफ क्या है? उनको कैसे समझ में आएगा कि वो एंटीलिया पे पर्दे कौन से लगाए या चद्दर कौन सी मतलब बिछाए? एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा. उनको मनीष मल्होत्रा को फोन करना पड़ेगा कि भाई क्या करूं, क्या पहनूं मैं, शादी तो आ गई, कंकोत्री चली गई, व्हाट डू आई डू? सो दैट इज अ राइट ब्रेन. इफ यू डिवाइड द वर्ड इनटू लेफ्ट, ऐसा बोला जाता है लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. द राइट ब्रेन डिसीजंस आर समथिंग विच either right brain decision makers cultivate and make a career out of it, or rest of the left brain people have to deal with. आप बोलोगे यार मैं तो, मेरे को ये सब थोड़े ना शेरवानी पहननी है, कुछ नहीं, मेरे को क्या है सब. बट मैं आपको बताता हूँ, शादी तो सब करेंगे नाना बोलते हुए. अब जब शादी करेंगे तो वेडिंग कार्ड छपवाना होगा, तो आप किसी के पास जाओगे और वो कुछ फॉन्ट अतरंगी यूज करेगा, या ये कलर वो कलर, फ्लैप ऐसा 4 बार खुले हुए, ऐसा कैसे हाउ डू यू डिसाइड वेदर दैट गाय इज पर वेडिंग कार्ड 25 रुपए या 75 रुपए ले रहा है? इज इट वर्थ इट? इज इट राइट और रॉन्ग? हाउ डू यू डिसाइड दैट?
वो जो मांगे वो दे दोगे, वो तो साला मतलब पिंच होता है, खटकता है, बट पैसे देने पड़ते हैं एंड डिसीजन लेना पड़ता है. So meaning you need to deal with right-wing people. I'll tell you how it is important. आपने सब अब हम मानते हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे रूलर है. हिस्ट्री में जाओ तो who is the best मुगल रूलर in this country? जो इस देश पे, हमारे देश पे राज करने वाला सबसे अच्छा एम्परर मुगल डायनेस्टी में कौन था? अकबर. औरंगजेब. नहीं, अकबर. So थोड़ा व्याजबी रखते. So उनका एक काउंसिल था, 9 रत्न बोला जाते थे. आपने कभी गौर किया उसमें से 3 लोग राइट ब्रेनर थे, एक कवि था, दूसरा ऐसा हाजिर जवाबी था, तीसरा वो गाना गाता था और बारिश गिरती थी, गाना गाता था, दिए जलते थे. अभी ऐसे बंदे का उसके काउंसिल में क्या जरूरत? And he is the best ruler and he has the best council, and उसमें से 3 out of 9, 1/3 of the population of his council was this mad people, right? So जो इसमें से इस सेशन में जो लोग हैं, जो राइट ब्रेनर है, जो डिजाइनर है, उनको सबसे पहले ये देखा होगा कि जब ऐसे तो जब हम कलाकार बनते हैं ना, तो फैमिली मतलब विश्वास टूट जाता है उनका कि ये तो भी बगल थैला लटका के घूमेगा, इसका कोई भविष्य नहीं है, या लड़कियों का लाइन लिया, लड़कियों का लाइन, ऐसा कुछ बोलते हैं. मेरे को भी बोला था अभी. बट उसकी जरूरत पड़ती है जब फैमिली में किसी की शादी होती है, या कुछ लोगो बनवाना, किसी विजिटिंग कार्ड. शादी तो डेफिनेटली तब कार्ड सिलेक्ट करने के लिए या कुछ सिलेक्ट करने के लिए आपको ढूंढ के चाचा मामा, दूर के मामा भी आते हैं कि अरे जरा देख लेना भाई, तो जिग्नेश देख ले. तो ये पार्ट जब तब होता है बिकॉज एंड दैट इज द प्राइड वी राइट ब्रेनर हैव टू हैव. दैट इज फॉर द गुड थिंग कि ओके, हम या तो अखबार के दरबार के रत्न हो सकते हैं, या फिर हमारी जरूरत ऐसे कभी ना कभी शेरवानी खरीदने में, पर्दे खरीदने में, या कार्ड बनाने में, या लोगो बनाने में जरूरत पड़ेगी. दैट इज वन पार्ट, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल हैव टू डील विद इट. So that is where probably the pride and importance of the right brain is basically. The best practice is that senior create. So इसका कोई शास्त्र नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. So मैंने इंट्रोस्पेक्ट करके सोचा तो क्या करना चाहिए. So I thought that okay, let's just come forward and share our experience how I cultivated my madness. बिकॉज आप संजय भाई ने तो लिख दिया क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग में कैसे सेशन लूंगा, मुझे मालूम ही नहीं, बुक ढूंढा नहीं मिला, कोई तैयार पीपीटी पीडीएफ नहीं मिला. फिर मैंने सोचा यही करते हैं. तो देन आई थॉट दैट देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म व्हिच एक्चुअली वेयर पीपल कैन कम एंड शेयर their experience, their method of madness, and that is what I called method of madness MOM, right? So that is the platform I have created. Actually मेरे लिए आज बहुत भारी टास्क है because the presentation which I am making to you, it's a 3-day workshop which I am trying to do it in 1 hour. So please forgive me if I go little bit, couple of minutes more or whatever, but that is what the task is. So now even if I say mom and उसमें कोई शास्त्र नहीं है तो भी बच्चा जैसा है ना, तो भी, but लेकिन बताओ ना क्या है मेथड, क्या है, कैसे होता है. Then I at least had to find something. तो मैंने बहुत गूगल किया, अभी तो गूगल है. So I found out this visual and that gave me the answer. That method of madness is all about giving a twist to the simple message, information, brief or whatever. So ये चम्मच में जैसे आप कुछ दे रहे हो तो उसको ट्विस्ट करते हैं. तो ट्विस्ट क्या है कि आपको जाना है पॉइंट ए से बी, मतलब जाना है अहमदाबाद से धोड़का, बट आप विरमगाम होके जा रहे, या कहाँ से होके जा रहे, कनौल होके जा रहे, या फिर महसाना होके जा रहे. दैट इज योर ट्विस्ट. सबका ही अलग अलग तरीका है एंड दैट इज द ट्विस्ट विच वी, हर एक चीज में ट्विस्ट, हर आर्ट फॉर्म में वो ट्विस्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक में कैसे ट्विस्ट होता है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या है कि इफ यू स्टार्ट कि चलो 10 सेकंड में साउंड निकालना है आ, बट अगर सोनू निगम को बोला तो बोलेगा आ समथिंग और सम, मतलब एवरीबडी सिंग्स इट, सॉरी फॉर माय सिंगिंग, बट एवरीबडी विल सिंग इट
in a different route. Different They'll take a genre. different route, and that will be called tune or a melody. Yes. वो एक बांसुरी एक पी करके बजना है, लेकिन that will be a hero, entire movie का crux, right? ठीक है. So it is about giving a mad twist to a simple information. एक सीरियल अच्छी खासी चल रही है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, जिंदगी जी रहे, रसगुल्ला खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, सडनली मतलब हस्बैंड सडनली एक्सीडेंट में मर जाता है और देवर उसके साथ अफेयर करता है वाइफ के साथ और सांस चाटा मार देती है. ये सब ट्विस्ट राइटर गिव्स टू मेक यू वॉच इट. So we all like twists, and that's the reason information has to be twisted, and that twist is called mad twist, is what I'm saying basically. So information plus mad twist equal to many roots, many creative thoughts. कैसे वो उस thoughts को, क्या आपने ये लोगो देखा होगा तो आपको कुछ अचंभा है, बीच में सांप जैसा क्या है, तो let me just show you what it is. हम सब जानते हैं कि मतलब जब मेथड ऑफ मैडनेस होती है तब बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे वो क्रिएटिव थॉट्स होते हैं, वो स्पर्म्स जैसे होते हैं. उसमें से एक ही माइका लाल होता है जो जिसमें पोटेंशियल होता है, पोटेंट होता है, जो बड़े आइडिया को, बिग आइडिया को या ग्रेट आइडिया को बर्थ दे सके. एंड उसको हमें चुनना है, उसको हमें उसके क्रिएटिव जजमेंट की, ओके कौन सा एक आइडिया जो बिग आइडिया है आउट ऑफ से मिलियन ऑफ स्पर्म्स व्हिच वी क्रिएट इन आवर पोटेंसी. एंड दैट इज व्हाट द एंटायर बॉल गेम ऑफ क्रिएटिविटी इज, राइट? सो बर्थ की बात हुई तो उसको थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं. So just to make it light-hearted, I said कि मतलब big idea होते हैं और उसका just wanted to show something which is related to birth. So आप पूछोगे कि okay ये you know there's a lot of madness which you shown, तो मतलब मैं अभी रहमान को कहाँ से बुलाने जाऊंगा कि भाई तू बता मोमबत्ती सर जलाने से तुझे ट्यून कैसे आती है, वो सब उनको पूछना. मैं मेरी बात बता सकता हूं. तो आई थॉट दैट ओके लेट मी जस्ट टेल यू हाउ डिड आई कल्टिवेट माय मैडनेस. सो सिंपल, you'll have to go back to 1969, the year I was born. Now what was the great thing happened in 1969? Don't tell me that you born, but man landed on moon. Wow, smart people. Yes. So the man first time stepped on the moon. Neil Armstrong and Buzz Aldrin actually stepped on the moon the year I was born. So ऐसा बोला जाता है कि उस दिन मतलब ऐसा महसूस है कि भाई अर्थ उस दिन मून के सबसे नजदीक आई, because virtually we all came close to moon. Now मून, चांद जब पृथ्वी से नजदीक आता है तो क्या होता है आपको मालूम है? पूनम के दिन पागल लोग और थोड़े और पागल हो जाते हैं, सुना होगा, राइट? उसको बोलते हैं ल्यूनर इफेक्ट. So was my madness due to lunar effect? Asking. Was it? Not really. No. So my madness is that I introspected my life and I saw
backward and saw what I do, what mad twist. So my point A to point B is to, okay, 1916 to 2020. What did I do? That's my point A to point B. I twisted by turning my weaknesses into strengths. Now, what were my weaknesses? So let's look at some of the weaknesses which I turned into strengths. So weakness number 1, I came from the third world. What third world? This is somewhat closer to my village. How it looks. The real picture is this. I was born in Varasda, which is 2,000 population village, 60 kilometers from Baroda. Krishna Vaghela, can you just mute? We'll play music a little later. So basically this is the village actual picture. Mahisagar ne Kanthe, there's a village, and where my both parents were teacher for 40 years. I was studied till 7th standard in that little village. My father's village was even smaller. It's a 10 house village called Vaghpura. I used to go to, he was teaching there. So you can say I used to go travel from Varasda to 6 kilometers to Vaghpura through fields and farms and Pagdandi and Kedi and Kante and Bad and everything basically. So I used to see this creature called scarecrow, and I used to wonder. And then I understood after some time that, okay, it means to communicate to birds without speaking, uttering a single word. Say, bhai, choch mat maro, don't touch the yield. So I learned to communicate. So where I learned to communicate with birds without uttering a single word, from an expert communicator called Scarecrow. And that inspired me to 30 years, 40 years later, a communication company, because I, being a villager, was desirous to tell a thing or two to this world. I had a extremely strong desire to communicate what I know, what I understand, what I feel, what I experience. And that desire was the conversion of a weakness to a strength. And that's why I landed up or bumped into or whatever the field called communication. Yeah. Now, Scarecrow was started in 9th February 2010, one of India's fastest growing agencies, a happier agency to work at by Monster and FX survey. We were 4th most awarded agency in Goa Fest in 15 and 17. Agency of the Year in Times Bennett and Coleman initiative called Mirchi Khan Award against Ogilvy and all of them. Agency of the Year in 16 and 17 in Golden Mics. Top ranked agency in radio category for Goa Fest for last 5 years. Listed by Campaign magazine UK, the world's top 16 independent agencies. Recently, so लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको शादी करा देना चाहिए, नहीं तो मतलब गांव के जो मतलब होते हैं जो उनको परेशान करते हैं whatever. So we actually got married with MNC Saatchi. So we became Scarecrow MNC Saatchi in 2018. One of the, like we here in India, the name surname Pandey, we here in the world surname Saatchi, and those Saatchi brothers found our agency lucrative. They partnered with us. MNC Saatchi is headquartered in London and more places. Around 30 offices in most of the part of the world. Our office is in Belad Estate, which is actually de facto London of India. And this is what our windows, it's a 143-year-old building, 14 years older than Victoria Terminus, VT station.
and this is our office. It doubles up as an art gallery. We put a worlds-based look, collected classic ads, and the brands handled those three of these pages. This more of a client presentation, so forget it. So yeah, we work with many of the people. So weakness number 2, I have a different perspective, like the tribals of Kalahari. So what happened? Let me take you to Botswana, a Kalahari desert, Africa. So one day, something fell from the sky. He had never seen anything like this in his life. It looked like water, but it was harder than anything else in the world. He wondered why the gods had sent this thing down to the earth. It was the strangest and most beautiful thing they had ever seen, and they wondered why the gods had sent it to them. Abo got his finger stuck in the thing, and the children thought he was very funny. At first, he tried the thing out to cure thorns. It had the right shape and just the right weight. It was also beautifully smooth and ideal for curing snakeskin. And Abo discovered you could make music of it. And every day they discovered a new use for the thing. It was harder and heavier and smoother than anything they'd ever known. It was the most useful thing the gods had ever given them, a real labor-saving device. But the gods had been careless. They had sent only one. And now, for the first time in their lives, here was a thing which could not be shared because there was this is obviously an iconic movie, God Must Be Crazy. And so what happened? Basically, we all have a preconceived notion. We have all been taught about apple ko apple bolna hai. Apple could be anaconda. I mean, A for apple. A for anaconda, A for asteroid bhi ho sakta hai. But we have been taught A for apple. These people don't know the use of a glass utensil like this. So they used it for different 10 uses. But we will only drink fizzy drink from this. That's the limitation. That's the curse of knowledge we have been cultivating and born with. Born with a very little blank slate, but we learn in universities with elders, with हम बच्चों को सिखाते हैं कि यही 5-6 चमकीले कलर है, बच्चा अंधा हो जाएगा, उसको भी ब्लैक एंड व्हाइट देखना है, उसको भी सेपिया देखना है, पर हम लोग उसको पिंक दिखाते हैं, कलर्स दिखाते हैं, ऐसे उसको नहीं समझ में आता है. We preconceive our thing as we born, like I just went to paint jungle, and like what all I could hear, in jungle, probably in concrete jungle, like I don't hear. There are 13 species of bird around this house, which I went to jungle and I cultivated. I can smell flower. So our 5 senses were absolutely all right when we as a human race when we born.
like a tribal we were. And we individual, when we are born, our all five senses are pretty much okay. But with time, with knowledge, there's a layer. So our skin become numb. There's a layer of knowledge on it. And that is what actually creates a problem, basically. So we forget to imagine. We have always added a layer and layer and layer and medium. पहले रेडियो होता था, उसके बाद उसमें विजुअल आया, इडियट बॉक्स उसको बोलते हैं हम, उसके बाद उसके अंदर इंटरएक्टिविटी आया, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वी जस्ट लेयरिंग इट. अरे ये सब हमें करना है, मशीन को क्यों दे रहे हो? हमसे स्मार्ट उनको क्यों बना रहे हो? आपने देखा होगा एक आदमी मैसेज करता है तो पहले इंट्यूटिव टेक्स्ट आती है, उसके बाद स्पेलिंग आती है, उसके बाद अपने भाई बहन दोस्तों के नाम आने लगते हैं, उसके बाद पैराग्राफ आएगा, उसके बाद वही बातें करेगा सैमसंग एंड एप्पल वी विल बी जस्ट वाचिंग द स्क्रीन. इंट्यूटिव टेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So technology, commerce, we were in a food chain which is very simple. Okay, जैसे शेर को हिरन को मारना है, वैसे आदमी को भी किसी को हंट करना था, खाना था, सिंपल जिंदगी जीना था. It was a food chain. From there we started barter. We had an access thing, we started commerce, and then we created economic chain, and now we are caught up in this supply and demand, and we forgot the basic simple chain which was running this planet. So and we had senses, we had everything which is within, which is all become numb. And creativity is all about unnumbing or resensitizing the senses which we have. What does happen? एक ट्राइब, एक प्री हिस्टोरिक आदमी होगा, उसको थकान हुई होगी, हंट वंट करके बैठा होगा किसी पत्थर को, कोइंसिडेंटली और एक्सीडेंटली देयर विल बी अ ट्री बिहाइंड. उसको मजा आया होगा कि उसके बैक को रेस्ट मिल रहा है, उसको उसने चेयर मान लिया होगा. उसके बाद हमने अभी कैसी कैसी चेयर बनाते हैं, मैं जिस पे बैठा हूँ, आप जिस पे बैठे, उसमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, उस पर लेयर डाल रहे हैं, राइट. सो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, कॉमर्स वगैरह वगैरह से, उसने एक नया मतलब, ऑफ कोर्स लाइक द बोअर बर्ड मेक्स देयर हाउसेस, बट दिस सिंप्लिसिटी. सो वी ऑल born with a lot of simplicity and lot of imagination to do things, but we are caught up in a preconceived knowledge, preconceived notions about every little thing, and that's why we stopped it. अगर किसी भी बच्चे को आप आम के फल को बताओ कि ये आम नहीं है, उसको इमेजिन करने दो, शायद वो कुछ और करेगा. But if we thusoing that knowledge, then of course he's not going to imagine anything. He's going to be consumer, not going to be creator. Right. So just like people of Kalahari, I also developed a different perspective to look at things in my childhood. How? This is what happened. When I was in third standard, electricity came to my village. There was no electricity before that. So it came when I was in third standard. And the way we look at iPhone 12 or whatever, Galaxy and all, I used to look at bulbs. I used to look at fan. I used to look at wire. I used to look at every little thing of that time, just like we look at the latest versions of gadgets. So mad people see things with different perspective. And with this different perspective, I have not only created thousands of ads, but some powerful pieces of public service campaign. I'll present two of them to you, and then we will conclude. So in 2005, when I saw in Nagpur, there was a Holi, and the park was closed. I was walking. I went to my brother's place that day, so that it was in Nagpur. I went there and I saw some blind children playing Holi. Really. And then that triggered me an idea, and this is what I created after that.
किरणें झलमल, जागो हुई है हलचल। इंद्रधनुष के टुकड़े लाकर घोलो उनको रंग बनाकर। धरती का हर कोना कोना अब तो अपने मन का होना। नाम ना हो अब रंग ही पूछे, लाल हो दाढ़ी तो हरी हो मूछे। धूम धड़ाका हो छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। धूम धड़ाका छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो। धूम धड़ाका छबर छबर। तेरा तो रंग ही नहीं छूट रहा है। वार्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं तुझे? These are the number of people that have agreed to donate their eyes after watching this film. If you wish to do the same, log on to www.ebai.org. So this was one thing which we did. In 2003, when we saw there was a Maharashtra government directive that everybody has to stand up when the national anthem being played, and people were not standing up, and that triggered us to create this, which was, according to Economic Times, it is amongst the 7 most patriotic communication or creation after independence. मैडम टीका ठीक। भैया खट्टा कम है। मामा मामा प्लीज मामा मामा पानी पूरी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, गला खराब हो जाएगा। अरे बेटा तुम ना बाहर। अरे 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 पारे उड़ाने अरे चाय এটা কি রে? ও এটা শুরু হয়েছে। क्या मस्ती करने का बारी में इधर मामा रेडी है अंकिल तो मैच करता है। Thank you.
राष्ट्रगीत के सम्मान में शर्म कैसे? राष्ट्रगीत का सम्मान यानी राष्ट्र का सम्मान. Yeah, and if I think time allows or Sanjay bhai allow, because I'm talking to the people in Gujarat, I would like to play the Gujarat anthem, which I did not plan. It's not in my schedule, but Sanjay bhai, is it okay if I'll play the Gujarat anthem which I created in 2008? Is Sanjay bhai there? Please, you should go ahead, sir. Okay. Yeah, please go ahead. Yes, so I'll just play that and then I'll conclude. 1 second. सिमाड़ा पण हार्यो ना कोई दी गुजरात है जीत्यो हमेशा गुजरात जो क्या पहाड़ों ने जो किया नदियों पण जो क्यों न कोई दी गुजरात टूटी ध्वजाओं ने टूटा मीनारा पण टूट्यो ना कोई दी गुजरात हो राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात हो राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात हाँ बैठी बजारों ने मीलो ना भूंगड़ा पण भुवड़ी खम गुजरात जीत्यूं हमेशा गुजरात आहारे मारो जीत्यूं हमेशा गुजरात धनन धरणी या ध्रुजे के आबला जड़ूंबे पण डगे न कोई दी गुजरात ओ राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात हारा न गांधी न हारा सरदार हारा ना गांधी न हारा सरदार हारू न कोई दी गुजरात ओ राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात ओ राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात દુનિયાના નિત નવા નારાની સામે ના હારે આ દિલનો અવાજ એવો સુણીને દલડાનો સાદ હો રાજ મારું જીત્યું હંમેશા ગુજરાત हो सुनीने दलडानो साथ हो राज मारू जीत्यूं हमेशा गुजरात आहारे मारू जय 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 गरवी गुजरात आहारे मारू जय 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 गरवी गुजरात रा रा ना 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 नो ता ना 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 रे रा रा ना 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 रा ना 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 नो ता ना 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 ना
मारू गुजरा So this was my expression to my motherland, my language, and the conclusion is everybody has heard of Sophia, that robo. Day by day, which actually a citizen of Saudi Arabia, the first robotic citizenship. So day by day, artificial intelligence and robotics are invading left brain and logical and literal thinking capabilities of human mind. But one thing which can't be invaded is the right brain capabilities of humans, which is lateral and magical thinking capabilities. Creativity of right brain lets you take the leap of faith. So we humans should not underestimate the power of right side of the brain and keep thinking great ideas. That's it. Thank you, Manish bhai. You have left all of us with goosebumps. Yeah. Thank you, sir. Yeah. And thank you for your elevating and very enriching presentations which you made with the session, which came out from the bottom of your heart, which we can witness it, and the responses were very overwhelming. You know, people were writing on the chat about the presentation, and which was really inspiring. So before we end, we can have few questions from the audience, very quick questions. Thank you. Yeah, few of them. Yeah, sure. Relevant to the subject which we have, right? Yeah. Please. Anybody who would like to ask a question, you can unmute and ask. Can I go ahead, sir? Please. Yeah, Sridhar. Yeah. Hello, sir. Thank you so much for the presentation. Thank you. Actually, I had a question in two parts. Since you already pointed out in the presentation that education kind of stifles creativity and makes us look at things in a typical way. And advertising is all about the shock element that we create, because attention is going down. I mean, you need to come up with new concepts. So I mean, with everybody doing so much creativity, sometimes is creativity more important than the message itself? That's part one of the question. And second is there are a lot of brands which jump in on viral trends that's happening. So we'll do one by one. So the first part, yeah. So see, God is the biggest creator. My understanding is that if you look at the creations like this, that God is a elder baby who's created with Lego blocks so many things in this world. It's younger babies who actually dismantle what he's created and recreate with those Lego blocks what we want. Like वो बच्चे का रहता ना कि वो एक एयरक्राफ्ट बनाया हुआ लेगो ब्लॉक्स रहेगा, उसको तोड़ के फिर एक शिप बनाएगा या कुछ बनाएगा. That is what we doing. He's not tired. I don't think we can be tired of creating new things. I don't think there's any end to creation. It is just like a infinite capability to create. It's like a Lego blocks. How many of them? Only thing you have to learn to spot these Lego blocks. So we forget how to decipher or spot the simple elements. Like in physics, you have molecules and whatever. In biology, you have cells. In music, it is notes. In the drama and theater, it is plot. In air, there's in visual world, there is a light, sharp, blur, whatever. All the fundamental elements which we see, dark, this thing. Once you need to spot them, which are Lego blocks, and we need to deconstruct them and then reconstruct them. That is the process of creativity, no matter whatever is the field. And I think it's infinite capability which has been. It's just that we don't spot it. Like for example, life में भी हम लोग काफी time we get caught up in screenplays and dialogues and song, and forget the plot. If you just cultivate a drone view and see अभी क्या है, अरे इसने ब्रेकअप मतलब वो चली गई, वो आ गया, वो हो गया, मतलब फिर हाथ पे ब्लेड मारो, कुछ लिखो, whatever. All those things में we get caught up. अगर if you see drone view, मेरा काम क्या था, मैं ऐसे 2069 में पैदा हुआ था, 1990 में पैदा हुआ था, मेरे को 2000 whatever तक मुझे कुछ करना है, right? मुझे ये बनना है. That is what you will be remembered after your death. That's what you need to be caught up in. These are all screenplays
dance songs and all those things. You just have to just bypass them. The relations, everything. It just a path. You have to create a unique path and people will be remembered. See, we all born with nobody is satisfied with the number of years given to us. हम लोग को क्या करना है? अपने को 72 दिया हुआ है ना, 720 करना है. You have to create something where 720 years तक if you can get मतलब recognize, और 96 है तो 960 करना है. If you can do that, that is what you need to do. So we always got caught up in doing your self thing and your another girlfriend, boyfriend, or whatever. So we forget we are living life for yourself. We are living life for one more person. You need to live life for the third person. The moment you just sensitize about your dad's sugar level, you will be correct. The moment you are sensitized about the lady who is not being able to cross the road, and if you help that old lady, that's where you need to live. So communication is the great thing, because communication is always for second person to third person. It's not about you. It's a benevolent task. Brand want to express her love to a consumer. So that's why it's very higher order. But joint communication kaam ho gaya beta. Anybody else want to pose a question? Yeah, I had one. Yeah, Dhoni, go ahead. Yeah. Hi, sir. How are you? I'm fine. Thank you. So my question was, how do you judge creativity? I mean, isn't it an expression, like an extended expression of yourself? Isn't it supposed to be subjective? Like, if I create something, if I write something, how would you decide it's good or not? So 3-4 क्वेश्चन आपने पूछे. एक तो सेल्फ एक्सप्रेशन, जब वो ब्रेकअप होता है तब आउटबर्स्ट होता है, इमोशन का आउटबर्स्ट होता है, तब आदमी फिलोसॉफिकल हो जाता है, तरह तरह के सोशल मीडिया पे कोट डालता है, कविताएं लिखता है. वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, राइट? वो वहां से शुरुआत होती है अपनी. ड्राइंग करता है, ये करता है, वो करता है. उसके बाद जब कोई भी असाइनमेंट मिलता है, वो थर्ड पर्सन, मतलब सेकंड टू थर्ड पर्सन. इट्स अ कम्युनिकेशन. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लीव समवन एल्सेस लाइफ फॉर समवन एल्स. And that is what we need to cultivate. That is called communication or creativity, whatever. How do you judge? Every creative has 3 molecules. मेरा hypothesis है electron, proton, neutron. ऐसा idea, craft and skill. Okay. तो business में ऐसा होता है idea, expertise and again skill. Skill sometimes take the technology. You have a idea of कि मेरे को इडली का जो खीरा है वो मुझे बेचना है, right? वो मेरा आइडिया है. मेरे पास ऐप है जो बेच देगी, सब कुछ है, बट बीच में रहेगा expertise and experience people ignore. That's why मतलब young startup उसका आर्टिकल आता है, उसको फ्लॉन्ट करता है, बट वो कोई मतलब नहीं है. If you don't know how, if you're not in a business of food, if you not have a business experience, you'll not be able to take the business or a category decision so fast. You have to cultivate the experience. Same idea में creativity में वही है. You have to get exposed to what has been done in 100-year back industry, what has been done. You have to go through the best masterpieces of work. You have to see the things in retrospective, and you have to not do what has been done and do something new. And that is, you have to get exposed. You have to get an instinctive level thing कि मैं अगर अभी किसी का पोर्टफोलियो देखता हूं तो मुझे 10 सेकंड लगता है. अगर कोई पहली साल में पोर्टफोलियो देखा तो उसको 1 घंटा लगेगा. I can judge it in 10 seconds, which someone else who's starting his career, seeing someone's portfolio takes 1 hour. That's the difference. You will get into a instinctive level decisions, and that's where the speed happens, and that's where the judgment happens. So basically तुम ज्यादा क्रिएटिविटी देखोगे तो उसको डिकंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि इसमें आइडिया क्या था, क्राफ्ट क्या थी, स्किल क्या था. उसको देख के फिर तुम अपना आइडिया बनाओगे, उसमें अपनी क्राफ्ट डालोगे, अपना स्किल डालोगे. That's what it is. Thank you. Yeah. Anybody else? Yes. Yeah, sir. Can I? Yeah, please. We'll take last 2 questions. Yeah, Vedanshi, right? Vedangi. Yeah. Vedangi. Please. Hello, sir. Hello. Yeah. Sir, I had a question with the changing dynamic times in social media playing its role. The attention span of audience is reducing. What effect does it has on storytelling in terms of advertising?
according no effect. See, understand that this is a fancy thing people sell. LinkedIn पे अजीब से designations आते हैं, मतलब कंटेंट राइटर. ऐसा कभी राइटर इज एन एंशिएंट, वाल्मीकि भी करता था, वेद व्यास भी करता था. उसमें कभी राइटर ही रहा है अभी भी. वो पेन एंड पेपर ही चाहिए उसको, लेकिन लिखते हैं कि सम कंटेंट राइटर. कभी किसी ने लिखा कि कॉर्नर मतलब या हाफ पेज राइटर, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या बैक पेज राइटर? इट इज लाइक लिंक्डइन को अपना वो अलग अलग ऑप्शंस देता है, हम लोग उससे खुश हो जाते हैं. कंपनीज को ऐसे अलग अलग लोगों, 100 लोग को रखना है, अभी 25 लोग से चलता था, 100 लोग, तो हर एक को अलग डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा उसको. तो डेजिग्नेशन से खुश करते हैं वो लोग, अलग अलग नाम देते हैं, और वी गेट कॉट अप इनटू ऑल दिस थिंग्स. देयर इज नथिंग. आइडिया इज द थिंग, मीडिया इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स. देयर इज नथिंग कॉल्ड मीडिया से. सो आइडिया इज ग्रेटर, मच ग्रेटर देन मीडिया. Idea is much greater than data. Nothing changes. It is a quality time which you really linger upon. मैंने अभी इतने जमाने में मैंने स्कैकरो के 100 एड में से टॉप 10 एड चुनने बोला था, उसमें से 10 में से 10 एड लॉन्ग फॉर्मेट थी, और मैंने नहीं चुना. मैंने एक्स स्कैकरोइड्स सबको बोला था, कुछ 200-300 लोगों. Nothing. अभी 7.5 मिनट का फेसबुक का एड आया है थोड़े टाइम पहले, पब्लिक ने देखा है, वाह भी किया है, राइट? एंड वही फेसबुक स्टॉप समथिंग थंब स्टॉपर करके कुछ चला रहा है कि 10 सेकंड का, वो पैसा कमाने के लिए बोल रहा है. Just Facebook is a business model. They will try to sell that new models. That's it. People want to binge watch 8 episodes. If the people have an appetite, why should they have a small and long का कोई? It's अच्छा है तो देखेगा, नहीं अच्छा है तो कल, आज नहीं देखा तो कल देखेगा. हमने जब YouTube चालू नहीं हुआ तब भी ऐड बनाए, अभी भी लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं. हमने सबसे ज्यादा वायरलेबल कंटेंट बनाया, बट मैं कभी नहीं मानता हूं कि वायरलेबल कंटेंट ऐसा बनाया, मतलब अच्छा लगेगा. तो मैं चाहता हूं कि जैसे मोहनजोदड़ो में लोग बर्तन ढूंढते हैं, ऐसा मेरा बनाया हुआ चीज 100 साल बाद मैं मर जाऊंगा तब कोई ढूंढ के निकालेगा, अगर अच्छा होगा तो. यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट. You should create like how content creator creates content, कि किसी दिन मेरे को उसकी रॉयल्टी मिलेगी 100 साल बाद, मेरे पोते को मिलेगी. Just you should think about that. Then you'll be peaceful. Otherwise you'll be always seeing अरे कितने व्यूज मेरे, कितने लाइक्स मिले, कितने इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोडक्ट अभी खत्म हो गया, ऐसा सोच के it's a long anxiety we are into. Thank you. Great. Yeah. Anybody else want to? Yeah. Sir, can I? Yeah, please. Yeah, thank you so much, Sanjay sir. Thank you, Manish sir, for giving this wonderful session. Sir, the question is in line with what Dhwani was asking. I wanted to ask you that the juniors that work under you, how do you get work from them? Like, obviously they have different mood swings and mood setups. Hitler, Mussolini, Churchill, everybody tried. I also do the same technique. No, that is. My question is, does creativity then come out from them? No, so inspiration is the only way. You have to do, and being hands-on is another way. अगर मैं आर्ट डायरेक्टर हूं और मेरा राइटर मेरे साथ नहीं बैठता है तो मुझे बुरा लगता है. अगर मैं मेरा जूनियर मोस्ट बंदा काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं तो काम करेगा. मैं काम करता हूं अभी आज की डेट पे, और कोई काम से मुझे शर्म नहीं आती है, उसको भी नहीं आती है तो वो भी करता है. That's the only simple formula. You have to work to basically किसी के भी साथ. I mean, if you tell only mom or a कामवाली बाई will clean the toilet, then one day it is going to collapse. If you will decide that okay, I will also one day Saturday I will clean my the toilet in the house, then everybody will do. Yeah. As simple as that. Yeah. Thank you, sir. Tarun, you have a question? Yes, I wanted to have a question. This is the last question we'll have. Yeah, please. Yeah, sure. So, sir, I wanted to understand how do you deal with a creative block? Like you're working on a big idea and you have basically weighed the pros and cons in terms of consumer insights and in terms of deep dive research as well. But still, you're not able to coin the big idea. There is a creative block. So how do you deal with it at that point of time? कितनी नाइट मारते हो आप कभी कुछ आइडिया नहीं आया तो? डिपेंड करता है सर. कभी एक रात में कभी मारी नाइट. मैंने 5 लगातार नाइट मारी, मेरे को ब्लॉक आया था तब.
Okay. So it is basically you have a limited time in your life. True. It's up to you. How do you? It's like a elastic. जितना है उतना ही है, उसको खींचने का अपना ही है. हेल्थ वेल्थ फैमिली सब है, उसको पटाओ, फुसलाओ, समझाओ कि मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मैं ना ड्रग्स दे रहा हूँ, ना मैं कुछ अल्कोहल पी रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ. और फिर खींचो उसको, जितना खींचता है. 24 घंटे है आपके पास, और 24 करके 70 80 बस 90 साल रहेंगे. आप उसको खींचो. खींचो, दिल से खींचो, खींचेगा वो. Okay. Thank you, sir. Yeah, so can I ask a question? Okay, Sapna, being a lady, I give you an opportunity. Tell me. Thank you so much, Sanjay ji, for arranging this amazing session. Manish ji, seriously loved your session, and सबसे पहले आपका disclaimer तो it is like wow, it's a vast factor of this session. Ads तो amazing है ही, but disclaimer was like something very unique. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, so I use that. मनीष जी, जैसे आप क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे आप जैसे लोग दे आर बॉर्न क्रिएटिव, यू नो, सम पीपल आर बॉर्न क्रिएटिव, उनको वो इंस्टिंक्ट्स इनबॉर्न होते हैं. बट इफ यू वे टू सी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, वो हमें प्रोग्राम करता भी है ज्यादा लॉजिकल बनने के लिए कि यूज मोर ऑफ योर लेफ्ट ब्रेन, एंड सम पीपल क्रिएटिव होते भी नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट देयर बेसिक इंस्टिंक्ट आल्सो. सो कैन यू सजेस्ट समथिंग लाइक हाउ टू make yourself more creative? What enhances creativity? Exposure is like that. See, I think if you will de-jargonize life, first of all, don't call it creative, don't call it anything, call it madness. You have been born with. How आपको किसी एक जगह जाना है, धोड़का जाना है, तो आप कितना डिफरेंट रूट लेते हो आपको ही पता है, राइट? आपको ढूंढना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा दुनिया, बेसिकली बहुत बारीकी से देखने का. मतलब आपको स्मेल आती है, आपको 5 सेंसेस चल रही है, नहीं चल रही है तो चलाओ, जंगल जाओ, मतलब थोड़े बच्चों के साथ देखो कैसे होती है. एक बारी इफ यू विल स्टार्ट स्पॉटिंग द लेगो ब्लॉक्स, देन यू जस्ट also see how other people has deconstructed and reconstructed. Like lot of people in the world, every field have the masterpieces and maestros. You just have to look for that the right kind of reference this thing. Everybody will help. Everybody who has a good experience, Sanjay bhai will help. So good books आप पढ़ो, good देखो, good this thing, and they उसको उस तरह से पढ़ो, क्रिएटर की तरह पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट. इट्स लाइक दिस, एनी स्किल, एनी क्राफ्ट यू डोंट रियली गेट फ्रॉम डे वन. एज आई सेड, मुझे एक भी पंछी नहीं दिख सुनाई देता. सेम जगह पे भी 13 स्पीशीज आई कैन सी. इन मुंबई देयर आर 149 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. You don't have to really go to Bharatpur bird sanctuary to spot a bird. Right? It's just that you don't look at it. It's just there. So you just have to cultivate it. You've been born with a capability to create. You just have to resensitize all your 5 senses and spot things and deconstruct and reconstruct. That's it. Thank you so much. Thank you so much, Manish. Okay, great. On behalf of Brand Club Ahmedabad, I once again thank Manish bhai to being here with Brand Club and contribute his knowledge and sharing his experiences with all of us. And also, I'm very sure that all the audience who have come here had equally participated in this, and it was truly participative, interactive, as the promise was given by you, right? And there are 2 new messages which I wanted to share it with you. We will be sending you a link where you need to give your honest feedback for this session. And the second most interesting part is that Brand Club is coming up with another session on 6th of December. The subject is the art of copywriting in advertising, which will be taken by Pratap Suthan, who is again a stalwart in the industry. First creative person I met in my professional with whom I met. He was in DDV creative group head, and I was a passed out visualizer. So yeah, so he is a man. And he is a man behind India Shining and Incredible India campaigns. So you will have a wonderful session with him also. And I think, Manish bhai, I personally thank you to come back to Gujarat and contribute your knowledge to Gujarat, because we have been always missing these things in Gujarat because of the exposure. So I would again request you that you keep quite coming to Ahmedabad or coming to such sessions, so that it elevates us with the knowledge. Okay, thank you everyone. Thank you all the participants
being here. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thanks. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.